you with a word in Hindi. I want you to repeat it. Would that be fine for you? Yes or no? Can I hear a louder yes? Fantastic. Om Shanti. थोड़ा प्यार से कहिए. मुस्कुरा कर कहिए. मुस्कुरा कर. उमंग उत्साह और जोश से कहिए. हाँ, दर्द भी नजर आ रहा है. ठीक है. नमस्ते and good morning. Can I hear good morning from you? Good morning. Before I start, I'd like to put on record my sincere thanks and appreciation to your Dean, Honorable Dean Sir, Dr. Yadav, esteemed faculty, professors, doctors, and my dear children. And special thanks to Priyanshi for the beautiful introduction. Friends, I have a request, and also the Brahma Kumari sisters and Dr. Saab. I have a request. Can I? Yes. Okay. I don't want it to be a I don't want it to be a monologue. I want it to be a dialogue. You understand what a monologue is? What is a monologue? Yeah. Monologue is I stand here and speak. You sit there and sleep. अच्छा ठीक है. वैसे भी भारत के बच्चों के लिए सुनना और सोने में ज़्यादा अंतर होता नहीं है. मेरे को विदेश के बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भारत के बच्चे तो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है. इतने इंटेलिजेंट है, इतने स्मार्ट हैं, इतने केपेबल हैं. मैं और मुझसे भी अच्छा वक्ता, ओरेटर, स्पीकर्स, क्लास करने वाले, जब हम आप बच्चों को कुछ बातें बताते हैं, क्लास कराते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि भारत के स्टूडेंट सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, क्योंकि भारत के बच्चे आंखें खोल के भी सो सकते हैं और सिर भी हिलाते हैं ताकि सर को बुरा ना लगे कि भाई हम रोजे में. आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ. इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के बच्चे तो क्या पावर ऑफ अटेंशन है, क्या एकाग्रता की शक्ति है, क्या ध्यान है उनका. एक बार ताली तो बजाइए. Can I ask you another question? Yes. Fantastic. But I want you to be very honest about your response. Friends, before I start, I can speak with you in immaculate, hardcore, polished British English. I may use certain words from the English dictionary. Could be a possibility, not necessarily that you not understand what I'm speaking. That's option number one. Option number two, मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप कर सकता हूँ. हिंदी की शब्दावली, ब्रैकेट में डिक्शनरी में से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जिसे समझने में आपको काफी पुरुषार्थ, ब्रैकेट में एफर्ट करना पड़ सकता है. That is option 2. Option 3 है हिंदी इंग्लिश मिक्स. बहुत अच्छा सर, ये मिक्स मतलब इनके चेहरा देख के पता ही चल रहा था स्टैंडर्ड क्या है. ठीक है ना. वैसे भी आपका ये थर्ड ऑप्शन सुन के दिल को बड़ा दुख होता है, क्योंकि शुद्धता का जमाना नहीं रहा, सबको मिक्स ही पसंद है आजकल. ताली किसके लिए बजाए? पॉइंट के लिए. पॉइंट डिलीवर्ड, एक्सेप्टेड और नॉट. डिलीवरी पर इतना ध्यान है, फ्यूचर में गायनेकोलॉजिस्ट ही बनेगी. आगे से डिलीवरी है. ठीक है ना. गॉड ब्लेस. Can I crack jokes like that? Yes. Would you feel offended? No. Fantastic. Choice भी क्या है? बोल रही है no, जैसे किसके no और हाँ से मैं प्रभावित हो जाऊँगा. ठीक है. बच्चों, आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो बुरा फील करो या फिर नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम सर आप चालू रखो. अंदर हालत गंभीर है, बोल भी नहीं सकते कुछ. चलिए, can I ask you a question? Okay. Would you be honest? Okay. मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स ही कर देता हूँ, ठीक है. If your response is a factual and a true and a real yes, raise your hand. And if it is a no, I mean I can understand, ठीक है. और अगर आपको yes और no में फिर भी थोड़ा सा
फ्लक्स है, कंफ्यूजन है, कुछ मत करेगा, आपके चेहरे से मुझे सब पता चल जाएगा, ठीक है ना? ऐसे भी नहीं खोया है बहुत। सर, ये बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं, किसी के दुख पर आप लोग ऐसा हंसते हो, क्या क्या आपका भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है, ठीक है? Respect, ठीक है? I mean, my sessions are like that. Believe me, bachcho, spirituality is this. Spirituality is not very white. It's not about something which is so heavy and you refrain from it at the 60th year of your existence. You would get into spirituality by the time you have thoroughly messed your life. It's not like that. It's something to do with your mind, friends. And that's what I'm here for. So my question is, I want a very honest response. And my question is, आप में से कितने लोग यहाँ जबरदस्ती बैठे हैं ये क्लास अटेंड करने के लिए? कृपया हाथ ऊपर उठाएं। बस ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है? बोला पता बच्चे क्या बोले, टकलू तू तो चला जाएगा, हमारी हाथ खराब होगी, हमारा इंटरनल मार्क्स के हाथ में, तुम तो आग लगा के निकल जाओगे, बाकी जीना हमको यहीं पर है, ठीक है ना? और आपको पता नहीं वो जो फ्रंट दो रो में बैठे ना, इनको सुनाओ ज्ञान, ये हमारी जान खाते हैं, ये हमारे जीवन को बर्बाद करके बैठे हुए, ठीक है ना? ताली तो बनता है, ठीक है ना? कुछ बच्चे बोल रहे सर 2-3 घंटे सुना लो, हमारे दिल की पूरी दुख ये 2 लाइन वालों को तो सुना दी, तो आज तक ऐसा फैसला नहीं हुआ है जो हमारी बातों को उन तक पहुंचा सके। I'm with your respect, sir. Please don't feel offended. And in case if you're offended, what choice do you have? Either you feel bad about it or you feel comfortable. There is no third choice. I mean, I was a teacher, and let me put on record my sincere respects to each and every faculty. My objective is not to insult, disrespect, or demean anybody. It's just to make you feel little light and relaxed. Only when the mind is little happy, it is in the highest stage to receive lot of information. When you are under stress, the ability of the mind to grasp information and knowledge, it becomes difficult. Am I right? Yes. Fantastic. आपके थोड़े से मन को हल्का कर देता हूँ, ठीक है ना? मेरे को पता है आप कितने दुखी होकर बैठे हो। बच्चों, ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि आप ही यहाँ जबरदस्ती बैठे हो। हो सकता है हम भी यहाँ जबरदस्ती है, ठीक है? हमारे भी ये टीचर्स बैठे हैं, देखो सुबह चलो प्रोग्राम, अरे मैं गाड़ी में कितनी अच्छी तरह सो रहा था, I mean, I had a very hectic day for the last couple of weeks. I traveled very extensively. और आपका मन पता नहीं क्यों ज़्यादा हल्का हुआ? हम लोग दुखी हैं, उसका ज़्यादा कम नहीं है। तू भी इक्वली दुखी है, उससे ज़्यादा खुश है। दूसरे भी खुद दुख हो गए तो उसका ज़्यादा सैडिस्टिक प्लेजर हम लोग डिराइव करते हैं। Yes or no? Yes or no? अरे मैं तो ऐसे ही हल्के में सुना रहा था। चलिए friends, my first question, and I want you to respond the way you are responding right now. If you can raise hand and respond, it will be easy for me because so many students versus myself. If you speak together, it will be difficult for us to maintain certain discipline and decorum. Would that be fine? So my first question is, आप लोगों को टेंशन होता है? हाँ जी, होता है? होता है टेंशन? या जिन लोगों को टेंशन होता है कृपया हाथ ऊपर उठाएं। Oh, that's okay, that's okay. Okay, question number 2. आप में से कोई हैं जिनको टेंशन नहीं होता है? वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। जिनको टेंशन नहीं होता है। अरे आप टीचर हैं? अरे आप तो देने वालों में से है ना? लेने वाले उठाइए जिनको टेंशन नहीं होता है। अच्छा, एक दो थे बेचारे ने उठाया, बोला यार अकेले को रहने दे, क्योंकि बाजू वालों ने तू टेंशन नहीं लेता है, तेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते, झूठ कितना बोल रहा है। ओके, last, third and the most difficult question. अभी सही की तरह इतना एक्साइटेड है, ठीक है?
रोक नहीं पाए अपने आप को। कंटिन्यू करिए, ये बैक बेंचर्स ना बहुत आगे जाते हैं, ठीक है? गुड, इनके लिए ताली बजाइए। इनमें क्या काबिलियत होती है, ठीक है ना? टीचर अपना काम कर रहे हैं, ये अपने में रहते हैं, ये दो दो दुनिया में काम करते हैं, एक टेबल के ऊपर वाली दुनिया, एक टेबल के नीचे वाली दुनिया। और अगर सामने कोई ताली बजाता सबसे ज्यादा आवाज पीछे से ना बजा बजा सब बजा लेंगे, पकड़े जाएंगे। They are overconscious because they know that they are not conscious about what is happening in the class. Continue the good work. ठीक है? So third and the most difficult question. आप में से वो लोग कृपया हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया और बताइए कि कौन सा कैटेगरी है, क्योंकि जब मैंने कहा टेंशन होता है तो होता है, तो तू क्या कर लेगा? फिर दूसरा प्रश्न, टेंशन नहीं होता, ये तो आपके रिस्पॉन्सेस है। ओके, चलो थर्ड। I was doing a program for the Indian Army long back. It was in Delhi. So he asked the same question. How many of you experience stress? Raise hand. A couple of them raise hand. Second question, if you don't have experience stress, raise hand. A couple of them. थर्ड क्वेश्चन जब मैंने पूछा तो तीसरा कैटेगरी में काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा ये कौन सा कैटेगरी है? तो के सीईओ साहब बैठे हुए थे, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ ब्रिगेडियर रैंक। उसने कहा गिरीश मैं बताता हूँ, इनका तो माई बाप मैं हूँ, इनका हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं जानता हूँ। मैंने कहा प्लीज बताइए सर इनके बारे में, तो आप ज्यादा जानकारी रखते हैं। उन्होंने कहा ये तीसरा कैटेगरी उन महान आत्माओं का कैटेगरी है जिनको हाथ ऊपर उठाने में टेंशन हो रहा है। तुम जबरदस्ती ये बेहुदा प्रश्न पूछ रहे हो, टेंशन होता है नहीं होता है फ्रेंड्स? चलिए, I'll share only one or two dimensions about this beautiful topic of today, that is mind, body and medicine. Although you are an expert in medicine, friend, I am not. Although I have a little experience of interacting with doctors, with surgeons, I interact very closely with the Federation of Gynecological Society of India, the OXI, and similar bodies, cardiologists, oncologists, I mean, without being a doctor. And what I come to know is that doctors also experience a lot of stress. And there is a very beautiful saying, Bacho. It goes like this. I think it is also mentioned in your book. I don't know very correctly, but you might have gone through it. It says, a doctor treats. Yes, a doctor treats. Question, I heal. If you can integrate your treatment with healing, oh wow, you also become somebody who can save the patients. Not only you are treating the body, but also at the emotional level. Let me share one experience of mine. I was doing a qualitative research during COVID for Harvard Business School, and we wanted to write a case study, and it was on resilience during challenging times. COVID was a very difficult time across the whole of the globe. Everyone faced a lot of difficulties. So we were doing a qualitative research, understanding how resilience, how the power of mind could help an individual face unprecedented times, difficult times. So we handpicked 40 personalities across the whole of the globe. And they were all people who were meditating the Brahma Kumari's Raj Yoga meditation. And they were holding very senior positions in the government, business, I mean different sectors. And I was the interviewer and I was asking those questions. We did an online program, online interview. I'll share only one experience, friends. This doctor's name is Dr. Yuvraj, and he happens to be Kokilaben Ambani Hospital, Mumbai, and he happens to be a robotic onco urologist. I mean, he is into oncology, but he does all robotic surgery. Very fantastic person. And I was talking to him, what kind of a person you were before you started meditating, wherein you had complete control of your state of mind. Whenever you wanted peace, you decided for the next 5 minutes, I'm going to remain relaxed and easy, irrespective of whatever the external world, the kind of pressure and challenges it is throwing to me. So you know what he told me? Maybe it can help you children for your future challenges. And he said, Girish, the greatest advantage I got was
I could handle my anger. I said, आप तो डॉक्टर हो. Can I ask you a question, बच्चों? Anger, physically, with your body chemistry, anger is healthy for any goddamn reason. किसी के अन्याय के विरुद्ध में अपने आप को justify करने के लिए मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ. For all the valid, good reasons, मनुष्य गुस्सा करता है. Please tell me, biologically, physically, anger is healthy or not? Anger is good or not? No. And this doctor said, I know everything, how the repercussions of anger, but I just couldn't control it. And then I asked him, "Aapko gusse ka karan kya hai?" With due respect to all of you, I know, friends, the kind of hard work you did to get into this particular college. You were the chosen ones. I couldn't clear the MBA, although I did not write the entrance exam, but like you, there could be thousands and thousands of students who could have written the entrance exam for a medical course, for an IIT course. Yes or no? I mean, you are brilliant in comparison to those who couldn't get into a seat here or any other medical college in India. You are special, you are unique. At least you knew how to put the hard work, translate into a result where you could enter into a medical college. But then, with that hard work, also comes a little amount of ego. That, yeah. And you know what this Dr. Girish told me? What I carried with me was the ego. मैं ऐसे ही robotic surgeon नहीं बना. I mean, look at his qualification. I mean, too good. And he carried his ego even in the operation theatre. He carried his ego even in his clinic. He carried his ego in the department. And his temperament, नाकी चोटी पे गुस्सा रहता था. सब थर-थर कांपते थे. क्योंकि I am Dr. Girish. ऐसे ही नहीं मिला. बहुत मेहनत की है. और उसका result that he was not enjoying life. He was not enjoying work. उनकी जो head nurse है वो कहते हैं हम तो कांपते थे. And when he started meditating, meditation is all about being in control of your senses, all in control of your emotions. If I ask you a question, friends, does your hand always listen to you? कईयों को बहुत doubt है, पता नहीं, या आपको पता? Does your hand always listen to you? Yes. Does your leg always listen to you? Yes. Only under one condition it will not listen. If you have paralysis, stroke on the left hemisphere of the brain, right side paralysis, even if you wish, you just cannot go out and take a glass of water. इच्छा है, लेकिन आपका electrical input इसको execute नहीं कर पा रहा है. Yes or no? You know better than me. मेरा हाथ, अगर मैं normal हूँ तो मेरा हाथ सदा सुनता है, मेरा पाँव हाथ सदा सुनता है. एक ही condition में नहीं सुनेगा. If I am stroke and paralysis. Question, friends, don't answer me. Ask yourself, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? तो फिर तो पैरालिसिस. और उस बीमारी को मैं थोड़ा हल्के रूप में you will appreciate it. मैं इस गीत के एक दो शब्द पहले गाऊंगा, उसका जो remaining part है I want you to sing loudly, सुर और ताल में एक साथ, right? चलिए देखते हैं आपका सुर ताल अच्छा है कितने का, ठीक है? Let's give the challenge. आप ही करो. और ऐसे थोड़े ना, ऐसे बैठेगा आप भी सीरियस होने चाहिए. Okay. दिल है क्यों नहीं मानता? खुद का ये दिल है और मानता नहीं है. चाहता हूँ, लेकिन दिल है. आप बताएं, क्या बात है? हमारे वाद्य यंत्र भी थे, तबला भी बजा रहे. बोला सर जिंदगी तो कैसी है, ठीक है नहीं है, लेकिन आपका सेशंस तो हम thoroughly enjoy कर लेते हैं. इतना कम कर सकते हैं. Now tell me, friends, you are driving a vehicle. The entire drive, the vehicle is in your control. You want to be in complete control of your future, which is uncertain. You want to be in control of your destiny, which you are here to make. You have done so much of hard work. But look at the mind. With that troubled mind, with that weak mind, with that fluctuating mind, you've still reached here. Look at the scenario where if you can little manage it, if you can little organize it, if you can little make it easy and simple, how beautiful, how
how good you can, make use of this precious life. I have just one request, friends. It's not about you getting that certificate, okay, fine, MBBS completed. It's not about you getting into a PG course in a better institute than this, maybe IIMS Delhi. I'm not interested in you having a very beautiful hospital and you are the dean director out there. That is not what I'm looking out for, friends. My objectivity here, when I'm speaking about from a very spiritual, heavy background, it's all about how happy you are with what you are right now. And most of you said, no, we are stressed. क्या stress लेकर आप कर रहे हो? That certificate, we are more, with due respect, I'm more frustrated. And you were not frustrated when you were in the 10th standard, and you were still not more frustrated when you were in the 4th standard. You were better off. फर्क ही नहीं पड़ता था. और जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, and you are going to professional, and you are going to be a professional. आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, प्रोफेशनल तो और अपने जीवन को और अच्छी रीति से हैंडल करना चाहिए. Because you are going to help someone else relieve pain, agony, diseases. So I heal, you treat, and God cures. ये two dimensions तो हमारा missing ही है. We are only treating, और उसका treating तो बाद में, उसका treating पढ़ने के लिए दिमाग खराब हो रहा है. In the whole process of while you are learning how to treat a body, can you also heal yourself with all the stresses that you encompass in this beautiful journey of a 4 years MBBS program or a PG program? And the challenge is, you know what? With due respect, मैं तो एम्स में जाकर के बोला, वहाँ पे I was in Kolkata almost a week back. The dean and director was sitting there. मैंने कहा सर आपके 4 साल के MBBS प्रोग्राम में एक class of 48 minutes on mind, one class on how to control your temper, anatomy, physiology, pharmacology. You read it, friends, and you are the best one, chosen one to read it. I couldn't do it. But at the same time, can you spend a little time of your daily schedule to enhance the power of mind? So I'll share one more experience then. I was doing a program in AIG, Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad. You enter into that hospital, you'll find as if it's a 5-star hotel. I mean, so posh. It doesn't look like a hospital. And a huge auditorium. And I was talking there, and I started my interaction. Suddenly, the master of ceremony happened to be a doctor, a very senior doctor. He took the mic from me and said, Girish, I just want to make an announcement. I said, please go ahead. So he took the mic and said, my dear audience, I want pin drop silence. I don't want any kind of disturbance here. And then he very categorically and officially announced, I want everyone to keep their dash on a dash mode. What was that? I want you to keep your mobile phone on a silent mode. बच्चों ऐसा क्यों कहा जाता है मोबाइल फोन को साइलेंट मोड करने के लिए? नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा. किसी का फोन भले उनका कोई इंटेंशन नहीं भी होगा आपको डिस्टर्ब करेगा, गलती से बच गया, उनको लगा कि साइलेंट मोड में बच गया, तो क्या कर सकते हैं? तो everyone followed. When he handed over the mic to me, I said, my dear audience, I'm a little defined what the doctor had said. I apologized upfront and I said, audience को मैंने कहा, please don't keep your mobile phone on a silent mode. जैसे ही मैं अपने ऑडियंस को ये कहता हूँ ना, कुछ लोग पहली बार जागृत होकर पहली बार घूर कर मुझे देखते हैं. यार तकलू आध्यात्मिकता 25 साल ब्रह्मा कुमारी एनजीओ क्या बोला था, तेरी मान्यता और तेरी मानसिकता हमारे जैसे मैच करता है, तो दिखता हमारे जैसा है. ड्रेस तो वाइट और मेरा प्रोफाइल ISR और क्या डॉक्टर स्पोक, बट तू तेरी सोच हमारी जैसी है. जो बोला जाता है ना उसका उल्टा नहीं करो, जो आनंद आता है ना वो आनंद शराब में भी प्राप्त नहीं होता है. जो हमको बोला जाता है और हम उसका उल्टा करते हैं और सामने वाला परेशान और दुखी होता है, ऐसा सैडिस्टिक प्रेशर आता है. आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ. सर एक बात अभी तक समझ में नहीं है, आधा घंटे से बात हर उल्टी बात भी काटने लगा.
और जब मैं अच्छी भारी भारी बात करता हूँ जीवन को आगे बढ़ाने इतना seriously, for all the wrong reasons people clap, for all the finicky reasons, I mean, with due respect, that's perfectly fine, I want you to do that. So I said, please keep your mobile phone on, not on silent mode. So when I said that, और ऐसे ही है कि disturb हो जाते हैं. Then I requested my audience. Can I request? Think about it, friends. Don't respond. Just think about it. Is it easy? I told my audience, मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में मत करिए. अगर हो सके 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 300 सेकेंड्स, अगले 5 मिनट के लिए अपने मन को साइलेंट मोड में करिए. क्योंकि डिस्टर्बेंस वहाँ नहीं होता है. डिस्टर्बेंस इधर है. वो तो ट्रिगर है, वो तो कॉज है, वो तो स्टिमुलाई है. हम शायद यहाँ पे 200-250 बच्चे सब मिला के बैठ, कितने होंगे ऑडियंस? 300, चलो ठीक है. 300 लोगों में एक का मोबाइल बचता है, बाकी 299 लोगों का भी बचता है. उसका गलती ये तो जानबूझ के. अब बताइए friends, are we a master of my own mind? When I said that, there was a senior cardiologist. He raised his hand. I said, sir, go ahead. I mean, I don't have a Q&A round at the end of my session. I mean, you can just go bang, 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 right now, stand up and ask questions. I'll be more than happy. So this, doctor stood up, a senior cardiologist. He said, Girish, I'm a cardiologist. And I said, go ahead, sir. He said, my grandson studying in the 2nd standard, 6 years of age. दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला मेरा पोता 6 साल का, वो भी मोबाइल को साइलेंट करना जानता, 3 सेकंड लेता है. मैंने कहा सर, your observation is perfectly fine. Switch on, drop down, mute, silent, vibratory, flight, do not disturb, कितने सारे बोर्ड बना दिए. मैंने कहा सर आप पूछना क्या चाहते हो? You know what he asked me? I'll ask the same question to you. He asked me, and I'm not a doctor also. He told me, Girish, I'm a cardiologist. मैंने कहा सर so what? मैं शरीर का हर इंच जानता हूँ, कितनी ऑपरेशंस किए. मैंने कहा गो अहेड सर. उन्होंने मुझसे पूछा, मैं आपको पूछता हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ कौन सा बटन दबाऊं जिससे मन साइलेंट हो जाए अगले 5 मिनट के लिए. So convenient in a mobile technology, equally complicated and complex when it comes down to my own mind. Yes or no? And that's where the imbalance is placed. Externally, you and I have grown magnificently beautiful, but when it comes down to the inner world, we are a little outdated. And the irony of human life is we don't even think about it. We are still struggling with that same vulnerable mind. I want to grow, want to succeed, want to do better in life. And I don't find. Hello? Girl, stand up. Doctor, girl, stand up. Yeah, brother, आपकी बाजू. Come here. You are the cause and you are the effect. ठीक है, इधर. बेटा हालत खराब करो. ठीक है. यहाँ पे क्या नाम है आपका? देखना good. Friends, the door is open. You find this is a boring lecture, stand up, come bang in front of me, look into my eyes और कहना टकलू बकवास कर रहा है. मैं आपको रेड कार्पेट वेलकम दे दूँगा. मैं चाहता ही नहीं हूँ कि जबरदस्ती आप मरो यहाँ पे. पता है क्यों? 2 कारण हैं. पहला कारण, मैं इंसल्टेड फील करूँगा ही नहीं. पता है क्यों? पहला कारण, और थोड़ा मजाकिया कारण है. 15 साल से शादीशुदा हूँ. ऐसे नहीं हंसते किसी के दूर. किसके लिए ताली बजा रहे हो? और दूसरा कारण, you insult me is your choice. आपका वो इंसल्टिंग वर्ड सुनकर मुझे क्या करना है वो मेरी मर्जी है. And I am independent of the responses of what you do. My response to a stimuli, to a person, to a situation, to an event, to a circumstances is not based on
your behavior. My response to a stimuli is based on my personality, and I know what my personality is, and I will remain silent and peaceful. Why I did that is to disturb someone else. That is not right. As per Article 21 to 25 the Constitution of India, that is infringement of the fundamental rights of an individual. You don't want to learn, don't learn. But you are not supposed to disturb someone else. I'll come very heavily on you, friends. I hope, boys, you understand what I'm saying. You don't want to listen, walk out. And एक और चीज भी है. If I give you the freedom to walk out, so can I also walk out. I can also exercise my choice, right? Question, friends. When it comes down to the mind, इस मन को शांत कराने के लिए, इस मन को पॉजिटिव बनाने के लिए, इस मन को पॉजिटिव चैनलाइज कराने का हमको ट्रेनिंग ही नहीं है. And it's so unfortunate. And let me tell you, the mind impacts your life. The mind impacts your physique. The mind impacts your psyche. The mind impacts your relationship. The mind impacts your performance. The mind impacts your memory. The mind impacts your concentration. It encompasses each and every dimension of human existence. And the challenge is, we don't understand what life is. And that's why we are struggling. I'll tell you, friends, my definition of life. I was doing a program again for an Indian Army. I just casually asked, "Oh, Shanti, hello, hi, how are you?" सब किया, good morning किया, और मैंने ऐसे casually पूछ लिया, "How is your life?" पूछता है ना, सब ठीक है सर, कैसा चल रहा है जिंदगी, कैसा? तो मैंने उनको पूछा, "How is your life?" My dear wonderful students, 3 options. Number 1, good. Good में सब आ गया, awesome, brilliant, magnificent, super, सब आ गया. Option 2, not good. थोड़ा टेंशन है, थोड़ा सा वरीज है, थोड़ी सी चिंता है, थोड़ा इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा सब ठीक नहीं चल रहा है. एंड ऑप्शन 3, कभी ठीक है, कभी नहीं है, कभी खुशी, कमाल है. ये सब याद रहता है, काम वाली बात याद है. कभी खुशी, कभी खुशी, कभी खुशी, ऐसे भी तो एक मूवी बन सकता है, लेकिन नहीं बनाया, वो याद है. कभी खुशी, कभी गम. चलिए छोड़िए. अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज नॉट रेज योर हैंड. If I ask you right now, on this particular day, this moment, your life falls under which category? Don't respond to me, respond to yourself. Good, not good, okay. Why I'm asking you not to respond? क्योंकि मैंने वहाँ पर पूछा उस ऑडियंस में, जिनका लाइफ गुड है हाथ ऊपर उठाइए, और पूरा पब्लिक ने उठा दिया हाथ, क्योंकि पब्लिक में हमारे से अच्छा जिंदगी किसी का नहीं. सोशल मीडिया पोस्ट देख लो तो लगता है स्वर्ग अभी ही है. क्या सकारात्मक विचारधारा है सारी संस्था. हस्बैंड के गुड मॉर्निंग मैसेज को देखकर वाइफ सोचे, तुम्हारे इतने श्रेष्ठ विचार, और वाइफ का डीपी देखकर हस्बैंड सोचते तो ऐसे नहीं. यहाँ तो मैंने उल्टा किया था, लेकिन डीपी में तो आई पुट माय बेस्ट. डिजिटल मीडिया देख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शुद्ध विचारों की जो सर्कुलेशन देख के लगता है हमने तो बचपन व्यर्थ गवाया, क्या दुनिया आया. बट रियलिटी इज समवॉट डिफरेंट. इट्स ऑल अबाउट शो बिजनेस. एनीवे, आप मत हाथ ऊपर उठाइएगा, इसीलिए मैंने कहा. मैंने वहां क्योंकि उनको हाथ ऊपर उठवा दिया था, मैंने कहा जिनका लाइफ गुड है, क्या बता सकते कैसे आपका लाइफ गुड है? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, बाकी मेरे को कोई डाउट नहीं है. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, बट जस्ट इंटरेस्टेड. So there was one person, very confident. He said, "I'll tell you, Girish, 5 reasons." Go ahead. The first reason he said, "My life is good because my wife is good." अच्छा. दूसरा कारण, ये तो और भी complicated था. उन्होंने कहा, "My life is good because मेरे बच्चे good." और जो छोटा वाला ना तो super good. 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, सुबह अपने आप उठ जाता है, अपने आप स्नान कर लेता है, अपने आप अपना बस्ता बना लेता है, अपने आप नाश्ता कर लेता है, अपने आप स्कूल का बस पकड़ के चले जाता है. स्कूल से आने के बाद अपने आप हाथ पैर मुंह धोकर, चेंज करके, खाना खाकर, सोकर, होमवर्क करके फिर टीवी देखता है. जब वो ऐसा कह रहे थे, उनके जितने बाकी लोग जो बैठे थे ना, उनको ऐसे देखने लगे. और एक ने तो पूछ भी लिया, "सर, ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हैं?" आजकल के तो बच्चे सुनते का, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, 10 बार बोलना पड़ता है.
आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मुंबई के बच्चों के बारे में। आप तो इतने अच्छे, एक बार आपके टीचर ने कहा ओके मैडम, डन मैडम, और डन हो भी जाता है, आपको रिमाइंड तो करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना? तो उनको पूछा सर ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो, तो पता उन्होंने क्या कहा, सीक्रेट है, नहीं बताऊंगा। Forget it. Third reason, उन्होंने कहा my life is good because financially I'm healthy. धन, संपत्ति, property, gold, FD, mutual funds, stock markets, debt, क्या बोलते हैं, shares. I am spread emergency. I know where to park my funds and I can take benefit of it. Fourth reason, उन्होंने कहा my life is good because my boss is good. आपके teacher good. Head of the department good, dean good, mother-in-law good. आपकी मुस्कुराहट से आपके दर्द का इतना क्लियर कट इंडिकेशन नजर आ रहा है, तो सर आप हमारी दुखती दर्द में क्यों हाथ लगा रहे हो? I was a very weird teacher, my dear students. I mean, thanks to Brahma Kumaris. पता है हमारे बाकी टीचर्स, वीडियो स्पेशल टीचर्स, फर्स्ट डे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स एमबीए बच्चों को पढ़ाता था मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो टीचर आके पता बच्चों को क्या कहते, फ्रेंड्स माय नेम इज सो एंड सो, आई एम योर प्रोफेसर फॉर दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज ब्रांडिंग. दिस सब्जेक्ट entails 40 hours of theory class and 40 hours of theory class, 5 assignments, 2 class tests, 1 surprise test, 6 presentation, 1 individual, 5 group presentation, and I mean the entire skeleton structure of the entire course for the next 2-3 months. And finally, the teacher would say, 60 marks university paper, and finally the Brahmastra, 40 internal marks. Name rekha. अच्छा वो देख रहे हैं सबसे खतरनाक ये 40 मार्क्स प्राप्त करना है. And further the teacher explained, 40 marks का bifurcation, 5 marks for attendance, 5 marks for punctuality, 5 marks for attitude, 5 marks for class participation. पीछे बैठ के बंदा बोल रहा है करना क्या है? खत्म कर एग्जाम निकाल, हम भी पढ़ लेंगे, आंसर लिख लेंगे, एग्जाम करके खत्म करेंगे. And comes Professor Girish, thanks to the Brahma Kumari's heavy background. And I would also say, I am your strategic marketing professor, 40 60 marks university paper, and finally the 40 marks. पता नहीं क्या कहता था, and it's honest friend. और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था 40 मार्क्स तुम्हारे अकाउंट में टॉप अप कर दिया. पता नहीं क्यों. गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, कैसे हैं सर, सब ठीक है सर, तेरे 5 मार्क्स का गुड मॉर्निंग. Can I ask you a question, please? Is punctuality worth 5 marks? Is punctuality worth 5 marks? Who is making it? If the system is making it, at least you have the sense not to be a victim of it. Can you come to the class on time because that is what you are, that's your primary signature. You carry it with you. And this is how successful people are. They don't show. ना मेरे को 5 मार्क्स का डर है, ना मेरे को रिवॉर्ड का अभिलाषा है, ना मेरे को आपके पनिशमेंट का डर है. मैं टाइम पर इसीलिए आऊंगा क्योंकि गिरिश इज इक्वल टू पंक्चुअलिटी, पीरियड, फुल स्टॉप, खत्म. एंड द मोमेंट यू बिहेव दैट वे बिकॉज़ यू लाइक पंक्चुअलिटी, नॉट फॉर दैट 5 मार्क्स एंड नॉट फॉर समबडी एल्स अलाउइंग दैट 5 मार्क्स इज ओनली वर्थ, यू नो, पंक्चुअलिटी इज वर्थ 5 मार्क्स. और बच्चों पता है प्रॉब्लम क्या है? मैंने देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, ओनली क्रिप अबाउट वन थिंग, नो फ्रीडम, नो फ्रीडम. अभी भी आप रो रहे हो नो फ्रीडम, और मैं आपको फ्रीडम देने के लिए तैयार ही नहीं हूं. बताएं क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको 40 मार्क्स टॉप अप कर दिया. तू पढ़, तुम नहीं पढ़, तुम पढ़ा नहीं आता, तो 40 मार्क्स ही चाहिए थे ना. तुमने अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद किया है ना, तेरे को अपना फ्यूचर बनाना है ना, मैं अपना पढ़ा दूंगा, बस इतना ही चाहते हो ना, बेटर डू इट. एंड पता है मेरे क्लास में क्या होता है? वो बाकी टीचर्स के क्लास में सुबह 8 बजे के क्लास में ये बंदा उठता है 7:30 बजे, ऐसे ही जीन्स पहनता है, टी शर्ट डालता है, उसका रूममेट होता है भैया नहा तो ले. तो बताइए क्या होता है? तो म्युनिसिपैलिटी का 5 पैसे लीटर का पानी में नहाता, मैं 200 रुपए 180 अब मैं परफ्यूम से नहाता, कोई फ्रेश से नहाता. ठीक है,
किसके लिए थाली बजा रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं 200 रुपए 180 ml वाले बॉटल से नहाता हूँ और वो अपना बैग लेता भागता है। पता है मुंबई की सड़कों में जब भागता है तो बजाज ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो 15 साल से बजाज ऑटो चला रहा है उसको अपने इंजन पर डाउट आता है क्योंकि इसका इंजन उससे फास्ट भाग रहा है। एंड एग्जैक्टली एट 7:59 ये क्लासरूम के क्या बोलते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके और वो टीचर को देखता है 5 marks और आप बाहर नहीं उठता है किसी के अंदर लाता है भाई 5 मार्क्स की तो हमारे सर पर तलवार रखी हुई है। एंड गिरीश सर का क्लास ये बंदा आधा घंटे में इंटर कर रहा है। हफ्ते में एक ही दिन आता है जिस दिन मेरा क्लास होता है क्योंकि सर को तो मतलब ही नहीं है पंक्चुअलिटी करके तेरे को ठीक रखना कर। अब ये इंटर करना है आइए चीफ के साथ बैठिए राहुल जी बैठिए ठीक है ना वो वाले राहुल जी नहीं मेरे स्टूडेंट का नाम राहुल जी ठीक है। आई एम सॉरी दिस इज अ पॉलिटिकल महेश कर देता हूँ नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ना। मैंने कहा महेश बच्चे बैठ कर तुम तो चीफ गेस्ट हो यार काय को तुम टाइम करोगे। मैंने कहा तुम फ्रेश लग रहे हो सर हफ्ते में एक ही दिन नहाता हूँ वो भी आपके दिन शेव यू सीधे करता हूँ। और पता है वैसे क्या कहता है सर आपके जैसे एक तो और प्रोफेसर नहीं मिल सकती हमारा मतलब 2 साल में भी आसानी से गुजर जाएगा। बच्चों पता मैं क्यों बता रहा हूँ आपको मैंने अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया तेरे को जब मर्जी आ जा जब मर्जी मत आ तेरे को मार्क्स ही चाहिए ना तेरे को दे दिया मारो मत मार्क्स के और ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। I may sound very 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 hilarious but at the same time I speak a lot of sense. What my student did when I gave him the freedom the first thing he did was to misuse it. औकात नहीं है आपको फ्रीडम के साथ खेलने की इसीलिए यहाँ कदम रखते साथ आपके पूरा सीनियर टीम आपको 5 मार्क्स का बंदूक दिखाता है क्योंकि है ही नहीं है यू डोंट वैल्यू और फ्रीडम इज अभी भी 5 मार्क्स का बंदूक कल की डेट में जिस हॉस्पिटल में काम करोगे वहां का बॉस आपको बंदूक दिखाएगा शादी के बाद आपकी वाइफ या पति आपको बंदूक दिखाएगा फिर बच्चे आपको बंदूक दिखाएंगे सासू मां बंदूक दिखाएंगे एंड यू विल बी सच अ फ्रस्ट्रेटेड लॉट कोई समझता नहीं सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कोई नहीं समझता देखो कोई तो है इतना अधिकार कि आप अपने मर्जी से चलो। I hope you are understanding what I'm trying to say. Can you do it because you love punctuality? Don't stop. And those values, unfortunately, हम इतने obsessed हैं with that marks. Anyway, the last thing I'll share, friends. वो सर ने कहा 5वां कारण why my life is good because मेरे फैमिली मेंबर्स का हेल्थ गुड है। अब थोड़ा सा खांसी होता है लेकिन ऐसे वो मेजर हार्ट अटैक डिप्रेशन कैंसर ऐसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा ठीक है शायद बच्चों आपका भी उत्तर इन्हीं लाइंस पे होगा हाँ मेरा स्टडीज अच्छा चल रहा है घर में मम्मी पापा का हेल्थ अच्छा है पैसों कैसे कोई चैलेंज नहीं है छोटा मोटा होता रहता है। I know similar lines if I have asked you the same question yeah मैंने वो सबको प्रश्न पूछा मैं आपको पूछता मैंने कहा सर अगर यही 5 जानकारी प्राप्त करनी होती मैं बहुत स्पेसिफिकली पूछता आपकी वाइफ कैसे है आपके बच्चे कैसे हैं प्रोफेशन कैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है आपके घर के फैमिली मेंबर्स का हेल्थ कैसा है। मेरा प्रश्न क्या था हाउ इज योर लाइफ आई एम आस्किंग यू अबाउट योर लाइफ यू स्पीकिंग अबाउट योर वाइफ। और मैडम ऊपर नीचे तो फिर हम पति भी ऊपर नीचे आपका लाइफ आपका होना चाहिए या डिपेंडिंग ऑन दीस पीपल सर्कमस्टेंसेस प्लीज टेल मी बच्चों लाइफ मैडम या माय चॉइस यस और नो। तो पता है उन्होंने क्या कहा तो ये तो लाइफ है। मैंने तो रो के क्यों बोल रहा उसको आके बोल ये तो लाइफ है। मैंने कहा अगर यही लाइफ है तो आपकी लाइफ तो इन सब पर निर्भर है। तो then he asked me a question I'm asking the same question he asked me that what is life बच्चों what is life what is life I'll just take a minute what is life let me tell you my definition of life before I joined the Brahma Kumari States and I completed my post graduation I started working in the corporate world doing very good in all the terms what you consider as successful but believe me friends जीवन की वो जो मूल परिभाषा है वो ही नहीं बदलता और मैं आपको बताता हूँ मेरी परिभाषा किसने बनाया। They are all the wrong belief systems. They are all the wrong perceptions and attitudes you carried since childhood with that heavy, क्या बोलूँ मैं इसको, flawed mental models
On that platform, your standing is so flawed, it doesn't work. And on that foundation, the record you are trying to build your beautiful building, it's not possible, friends. I am very strong in what I speak, friends. You can thoroughly challenge it, and I'll appreciate it. Because I'm just not speaking, I come with so much of my experience, friends. पता है मेरा डेफिनेशन ऑफ लाइफ जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, छोटू गिरीश 500 जीबी हार्ड डिस्क खाली, अभी प्रॉब्लम है आपका 500 जीबी हार्ड डिस्क में 600 जीबी अनवांटेड फाइल्स है, इट डजंट मेक सेंस, स्टिल स्ट्रगलिंग विद दोस वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, अच्छा नहीं पढ़ता का तात्पर्य है भारत की मम्मी लोग जैसे चाहते थे वैसे नहीं पढ़ता था, और भारत की माताएं चाहती थी बैठ के तू नहीं पढ़ता है, और बॉयज वैसे भी बैठ के नहीं पढ़ते थे, हम थोड़ा खेलते कूदते घूमते खाते पढ़ते, गर्ल्स बैठ के पढ़ती थी। और उस जमाने में मेरा दुश्मन नंबर 1 पता है कौन था? कैन यू गेस? मेरा दुश्मन नंबर 1 मेरी बड़ी दीदी थी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी, और उसके कारण फ्री फोकर डांट हम खाते थे। मम्मी बस एक ही डायलॉग, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को देख। अब मेरे को मन में आता है एक दिन तो देख लूंगा इनको। अरे यार तुम्हारे कारण हम डांट खा रहे हैं, मैं तो दीदी के पास जाके बोला, दीदी तुम भी थोड़ा खेलो ना, तुम भी थोड़ा खेलो ना, तुम भी थोड़ा चल लो ना, तुम भी इधर उधर घूमो ना, अरे तुम्हारे कारण हम डांट खा रहे हैं। और मम्मी ये कि चुप बैठ के नहीं पढ़ता, बैठ के नहीं पढ़ता, ऐसे भी नहीं पढ़ता। एग्जाम के दिन नजदीक आ गए, 2-4 दिन बचा था, एग्जाम के दिन नजदीक आए, और घर में सबसे ज्यादा तनाव किसको होगा? एग्जाम आपका है, टेंशन सबसे ज्यादा किसको होगा? क्या बात है जी, आपकी मम्मी मेरी मम्मी सेम मम्मी, मैंने सोचा आपकी मम्मी कुछ अलग होगी, सेम है, सेम टू सेम। अच्छा लगता है ना बच्चे बोलते हैं, हाँ माता जी का तो पार ही कर गया, she lost it because I was not studying 2 days left. You know the sheer frustration what she asked me? She asked me, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? और क्योंकि हमारा हार्ड डिस्क खाली था, हमने इंस्टेंटेनियसली इवोकिंगली टॉप करके जवाब दे दिया। पता है मैंने मम्मी को क्या कहा? मम्मी ने फ्रस्ट्रेशन में पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 1 डजन, I'm perfectly fine with it. Oh my God, when she heard कितना भी चलेगा, her eyes popped out. She had massive cardiac chest arrest, kidney attack, liver attack, spine attack, full body attack. और she was writhing in pain and frustration. अब छोटू गिरे सबसे ज्यादा मम्मी से क्या करता है, और तो कोई था नहीं, ठीक है ना? अब मम्मा का ये दुर्दशा देखकर मैंने तुरंत डायलॉग ही चेंज कर दिया टू मेक हर कंफर्टेबल। पता है मैंने मम्मी को क्या कहा? तेरे को कितना चाहिए? And you know what she told me? 100 पे 100. And the first thought that came to my mind is, यार 8 घंटे स्कूल में जाके मरूं मैं, होमवर्क करूं मैं, क्लास में टीचर की डांट खाऊं मैं, मुर्गा बनूं मैं, स्कूल से आने के बाद तुम धक्का मारकर वापस मुझे ट्यूशन भेज देती वो झेलूं मैं। मार्क्स किसको चाहिए? जोर से बोलिए और ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। वहां जहां बैठकर अब डॉक्टर का जो A4 साइज सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हो ना, ये सब यहाँ से आ रहा है। Are you sitting there because you love that subject? Or is it because the whole world identifies you with the tag DR? ये बहुत subtle है friends, और इसको जब तक आप handle, please become a doctor. I have no problem, I'll help you. But see the motive, the identity that you create with that tag. You are not the tag. Anyway, मम्मी को 100 में 100 चाहिए, to the best of my capacity, ability, खेलते कूदते घूमते खामते भटके हुए हमने पढ़ा दिया, एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया। और हमको तो बचपन में क्लासरूम में रिजल्ट दिया जाता था, मैडम ने कहा मास्टर गिरीश कम हियर एंड टेक योर रिपोर्ट कार्ड। हम तो हमेशा ही खुश रहते थे। हम पहुंच गए मैडम के पास, मैडम ने रिपोर्ट कार्ड देखा और आई स्प्रिंकल्ड एंड शी सेड मास्टर गिरीश कांग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। मेरे को समझ में नहीं आया क्या कीप इट अप करना है, हम तो सदा अप ही रहते थे। ये मम्मी पापा अप एंड डाउन हो रहे, टीचर अप एंड डाउन हो रहे, इस संसार में जितने बड़े सब अप एंड डाउन ही हो रहे, कभी खुशी कभी गम। छोटू को 2 झापड़ लगाया मम्मी ने, 2 मिनट रोया, फिर मुस्कुरा के कहता मम्मी आई लव यू, आइसक्रीम मिले करके। आगे में धूल रखा था, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, चाहता हूं यहां पर मरते दम तक तेरे को नहीं भूलूंगा बेटा, यार तूने क्या कहा था उस समय। अचार डाल लो अपने मन का, हार्ट इसमें कचरा डाल दे रखा है। एनीवे मैडम ने कहा कीप इट अप, हमने कहा पता नहीं क्या कीप इट अप, हमने रिपोर्ट कार्ड को कीप इट डाउन बैग में रख दिया, हमको तो मतलब ही नहीं। और आगे मेरी मस्ती किया, शाम को थके हारे हम पहुंचे खेल कूद कर। जैसे ही मैंने घर की घंटी बजाई, मम्मी को पता चल गया छोटू आया विद द रिपोर्ट कार्ड। ओह माय गॉड,
She broke the Olympic record of high jump, long jump, pole vault. Within nanoseconds she reached the door and she opened the door और मुझे देखकर कहा रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा बस दिल रखा देखो. उनको ज़्यादा मतलब. She pounds on the bag, hands in the back, took the report card. खोल कर, ओ उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई. She was really happy. पता नहीं क्यों? 75% मार्क्स थे. मम्मी को लग रहा था नालायक फेल होगा. 75 was more than expected. She was super delighted. Climax number 1. पता है मम्मी ने क्या किया? मैं आंखों के कोने से देख रहा था. मम्मी के पापा के पास रिपोर्ट कार्ड दिखाकर मम्मी ने पापा को कहा मेरा बेटा है. And I was wondering, what's your contribution? चलो छोड़ो मम्मी को पापा को शाम को अब चल रहा है. क्लाइमैक्स नंबर 2 and the most important climax. आधा घंटे के बाद my mama barges into my room and I'm taken aback. And you know what she does? She gives me 2 big tight slaps, one on the left, the other on the right. दो थप्पड़ लगा के देती है मुझे. मुझे समझ ही नहीं आया थप्पड़ किस बात. 75 लोग हैं, तुम भी खुश, पापा भी खुश, सब खुश. क्या प्रॉब्लम? मैंने तुरंत दिल्ली फोन लगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मेरे को स्टेट एजेंसी पे कुछ भरोसा ही नहीं. मैंने कहा मुझे सीबीआई को आधा घंटे में मुझे रिपोर्ट दे, थप्पड़ क्यों पड़ा? उन्होंने एक लाइन में मुझे टेलीग्राम में नोटिफिकेशन दिया. पता है मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला. घर के बाजू में हनुमान मंदिर था. हनुमान मंदिर मस्जिद जो भी गुरुद्वारा जो भी समझ लो ना, जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल. मंदिर था. 75 की खुशी में सोचा था एक नारियल चढ़ाऊंगा हनुमान जी को क्योंकि 2 मिला. मैंने भी प्रेयर को एस्केलेट कर दिया. मैंने भी 2 नारियल ऑफर में हनुमान जी को थम थम नारियल चढ़ाया. मैंने कहा भगवान जी बहुत कष्ट में. भगवान जी ने कहा बच्चे कष्ट मत सुना, मैं नहीं हैंडल कर सकता. तेरा दुख और पीड़ा को मैं सुन नहीं सकता. बस मांग क्या चाहिए? 1 पे 1 फ्री. एक पर ऑफर एक है, तू मांग. मैंने कहा भगवान बस एक ही इच्छा. भगवान जी ने कहा बेटे तू जो मांगेगा तेरे को मैं वरदान दे दूंगा. मैंने कहा भगवान जी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी इच्छा है. बोलो बेटा. मैंने कहा भगवान जी मुझे मिले या ना मिले किसी और के मिलने पर आज आपका 22, 23, 24, 25 जो भी आपका उम्र है, किसी और के मिलने पे दर्द ज्यादा होता है. Where is this fight coming from? It's a deep rooted subconscious belief. और वो इसीलिए था क्योंकि मेरे 75 पर मेरे को मार नहीं पड़ी, उसके 90 पर मेरे को मार पड़ी. Someone else's gain is more painful. Thanks to my dear darling sweet mama, she's no more right now. Thanks to the society, thanks to papa, thanks to religion, thanks to books, thanks to media. They are all feeding your mind with fantastic belief system and you don't analyze it. 5 रुपए का पेन भी खरीदना होगा ना, ऐसे नहीं खरीदते. लिख के देखते हैं पेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या क्या कचरा भर रहे हैं उसका कोई फिल्टर नहीं है. You and I are victim of all those fines and folders. आध्यात्मिकता आपको इनर फिल्टर बहुत अच्छी तरह दिखाता है कि कर क्या रहे हो अपने साथ. Is it valid? Is it beneficial? Is it आपको value add करेगा? तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना मुझे. मेरा पहला definition, thanks to my mom. मिलना, having, getting. कितना marks मिलेगा? First rank मिलेगा, NEET में admission medical college में मिलेगा, टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, शादी में अच्छा परिवार का रिश्ता मिलेगा. बड़े जो बैठे हैं, with due respect, हमें गर्ल्स also included, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा. पहला डेफिनेशन, मिलेगा तो खुश, नहीं मिलेगा तो दुखी, किसी और को मिलेगा तो ज्यादा जलन. क्यों? क्योंकि लाइफ ही है. I don't know. मुझे नहीं समझ में आ रहा है. टीचर ने भी कहा कितना मार्क्स मिलेगा तेरे को, पापा ने भी कहा. अरे मेरे को दिमाग खराब हो जाता था. हम छोटे पर थे, किसी रिलेटिव के घर में जाते थे ना, वो सेकंड डेफिनेशन है. पता क्या बोलते थे? मैं 10वीं 11वीं में पहुंचा ना, तो पता है मम्मी ने दूसरा डेफिनेशन अप्लाई. तू बड़ा होकर क्या करेगा? कुछ भी चलेगा. ओ माय गॉड, फिर से उनको हार्ट अटैक, आइस पम्प और लिवर अटैक, किडनी अटैक. Doctor, engineer, chartered accountant, with due respect, sir. I really have a lot of respect and gratitude for each one of you for the hard work, toil you have done. I mean, I'm not here to disrespect you. Doctor, engineer, अगर नहीं बन पाए तो फिर गिरीश तेरी तो कोई औकात ही नहीं. You don't exist. बने, you are good.
नहीं बने, कौन? और सारा दुनिया क्या करे सर, क्या करे सर, it's all doing. The first one is getting, having and getting and doing के चक्कर में the third and the most essential, the being is lost. What you have is not what you are. I have a mobile phone. Am I the mobile phone? No. I have 2 kidneys. I am 2 kidneys. क्या बकवास कर रहे हो? आपको ज़्यादा पता है किडनी के बारे में. I have 206 bones. I have 2 eyes. Are you 2 eyes? मैंने नहीं बनाया बच्चों इंग्लिश. मैंने नहीं बनाया हिंदी. मैं आपको बता रहा हूँ जो आप और मैं यूज लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज हम यूज करते हैं. मेरा शरीर दर्द कर रहा है. कभी बोला मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ? डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर साहब के पास जाकर मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं हाथ में टूट गया हूँ, मैं सर दर्द कर रहा हूँ, मैं आंखों में. पता है भाई साहब क्या कहेंगे? 3rd फ्लोर लेफ्ट साइड साइकियाट्रिक वार्ड मेल, वहां जाके टॉप फ्लोर इलाज करो. तेरे हाथ को बाद में देखता हूँ. मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरा सर, मेरा बैग, मेरा मोबाइल, मेरा माइक, मेरा ऑडिटोरियम, मेरा कॉलेज, मेरा घर, मेरी गाड़ी. मैं कौन? मेरा नाम गिरीश. भारत में कुछ कम्युनिटी में 6वें दिन के बाद 7वें दिन पे नामकरण समारोह होता है. गिरीश, हरीश, मनीष, सतीश. वो कौन 6 दिन तक? आधार ही नहीं है आपका कार्ड. You don't have a name. वो जो बीइंग है फ्रेंड्स, मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है. सिम कार्ड निकाल दीजिए, डब्बा है वो. इस शरीर रूपी मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक नॉमेनक्लेचर में आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं. थोड़ा तो उसमें ये माइंड है. गुस्सा आपकी घुटनों में आता है बच्चों? कहाँ आता है गुस्सा? मन में. थोड़ा तो उसकी भी सफाई करनी चाहिए. ठीक है? So life is an experience. Can you experience peace right now? Can you experience the beauty of studying the MBBS program? चलिए, we do another 2 minutes one exercise and दीदी से meditation सीखेंगे. 2 मिनट का demonstration. हमारा ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, very close by. जब भी आपको टाइम मिले, it's free of cost. आज टाइम नहीं है. I have a pen drive. मैंने सोचा था मैं आपको presentation दिखाऊंगा. We worked with Dr. APJ Abdul Kalam for 8 years on a project called as regressing coronary artery disease. It's called as the ABU trial. Please go and read. We have 10,000 angiography reports. We didn't do it. The research was done by DIDI, Government of India, sponsored by the Ministry of Health and Ministry of Defence. डॉक्टर कलाम जब भारत के प्रधान राष्ट्रपति नहीं बने थे, जब डीआरडीओ के चेयरमैन थे, वो 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एड्स, हार्ट अटैक एंड कैंसर. और उनको पता चला भारत के 70% से जनसंख्या के लोग एंजियोग्राफी नहीं कर सकते. एंजियोप्लास्टी तो बहुत दूर की बात है. हार्ट ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली. सो ही वाज लुकिंग आउट फॉर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. आई मेट हिम. आपको लगेगा नहीं भारत के राष्ट्रपति जी सो हम्बल, सो पोलाइट, सो सिंपल. 8 years of research. और पता है उसका हाइपोथेसिस क्या है? बहुत ध्यान से सुनना है. Your thoughts are just not mere vibrations in the air. They are definite electrochemical processes taking place in your hypothalamus with physiological consequences. If your thoughts are full of distress, worry, anger, fear, ego, the brain starts pouring stress hormones and will impact the sympathetic nervous system and will start pouring in all the negative hormones, cortisol, adrenaline, negative. And the block in the mind will start causing blockages in your system. If you can reverse this process consciously, and if you can turn your thoughts into peace, love, happiness, the brain starts pouring good hormones and your parasympathetic system will activate and it will heal. Doctor treats, I heal. Can I know what is that element, what is that function within me which can heal? And you and I don't have any time for the healing element which we call it as a soul. ठीक है? इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ. करें 100% ब्लॉक को भी reduce to 30% immediately touch the patient. 10,000 angiographic evaluations are there. I want you to उनका छोड़ो फ्रेंड्स, आप अपने लिए तो कर सकते हो. Yes, चलिए एक्सरसाइज करें. Then we do meditation. Keep your fingers like this. मास्क नीचे करो ताकि 2 मिनट 1 मिनट. Yeah.
भाई साहब का फोटो खींचो, यहाँ स्टेज से खींचो, ऐसा स्ट्रेट करो दोनों उंगलियां से, या फिर दोनों हाथ की उंगलियों को होठों के किनारे। बहुत अच्छा। अगले 24 घंटे तक ऐसे ही रहना, यहां से ऐसे ही जाना है, यहां से नीचे वाले फ्लोर में पहुंचे नहीं, आपको एसएमएस व्हाट्सएप में आ गया, टुमारो टेस्ट। तो पता है आपको क्या करना है? अपनी फ्रेंड को कहना खुशखबरी दूं, इसमें पता चल गया तो क्या करना है। तू गिरीश ने तेरे को बताया मुस्कुराने के लिए। For all the senior teachers here,